જિલ્લા જેલના કાચા કામના કેદીએ વચગાળાના જામીનની અરજી કરી હતી, જેનો અઠવાડિયા સુધી જવાબ નહીં મળતા બંદીવાન કેદીએ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું તેમના પરિવારજનોએ જણાવ્યું। જિલ્લા જેલમાં કાચા કામના કેદી તરીકે નિલેશભાઈ અનિલભાઈ ખોરાસી છેલ્લા 101 દિવસથી જિલ્લા જેલમાં બંદીવાન તરીકે છે, જેમણે ગત તારીખ 6/12/2024ના રોજ મહુવા સેશન્સ કોર્ટમાં જિલ્લા મારફતે વચગાળાના જામીનની અરજી કરી હતી, જે અરજી અંગેનો જવાબ જિલ્લા જેલમાંથી નહીં મળતા નિલેશભાઈ ખોરાસીએ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું તેમના પરિવારજનોએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું। अनिल खोरासी है, मारा भाई है तेनु नाम निलेश अनिल खोरासी है। ते हाल भावनगर जिला जेल में काचा काम तरीके जेल में है। अमारी एक अरजी थी 6 डिसेम्बर के अमारी जामीन अरजी भाई मूकेली थी 6 डिसेम्बर में थी, तो जे पुलिस द्वारा 30 डिसेम्बर सुधी महुआ कोर्ट सुधी पहुँची नहीं, तो तेनो प्रश्न खाली मारा भाई जेल अधिकारी ने पूछता, तो जेल अधिकारीओ शू थयुं खबर नहीं, पण पछी त्यां काचा कामना कैदीओ पाका कामना कैदीओ अने जेल स्टाफ द्वारा मारा भाई ढोर मार मारवामां आवेलो छे। अने पछी मारा भाई सुसाइड अटेम्प्ट करेल छे। मारा भाई काले सुसाइड अटेम्प्ट करेलुं छे अने अमने ई वस्तुनी जाण हजी सुधी अमने करवामां आवेल नथी। अने आजे अत्यारे अहींया मारा भाईने जे अंदर छे तो ते पाछो ए सुसाइड अटेम्प्ट करवानी कोशिश करेली छे। अमे पुलिस विरुद्ध गमे पण निवेदनों के अमे अरजी जेल में मोकलवा मांगीए छीए, तो एमने जेल प्रशासन द्वारा मोकलवामां आवती नथी कि अमारे हजी लखवामां आवती नथी अने पूरो त्रास आपे छे। आना विरुद्धमां अमे भावनगर कोर्ट में अमे एक अरजी पण करेली छे जज साहेबने कि मानसिक त्रास आपवा बाबत। आवो बनाव भावनगर जिल्लानी जेल में आना पहला पण एक वखत बनी गયેલો छे, कैदीओने त्रास आपे छे तेवो।